Although the slavery ended in 1965, but due to segregation laws and general discrimination in the society, the lives of black people or people of color did not change. 1896, there came a decision from Supreme Court of America, which is called Plessy versus Ferguson, 1896, which made the principle separate but equal. This principle is called separate but equal. When black people demanded their rights under the Constitution of US, the Supreme Court stated, you have rights, but those rights are not against the white people. So you are equal citizens of America, but you are separate citizens of America. Separate but equal principle, equal but separate principle. This tells you, even at the cusp of 20th century, how Supreme Court was behaving with the people of color. But after the Second World War, the people of color refused to live like second-class citizens in America. They started demanding equal jobs, equal pay, better living conditions, equal fundamental rights under the Constitution. They were no more ready to be called out to be second or third class citizens. The first success of this movement came in 1954 with Linda Brown case, or more commonly known as Brown versus Board of Education. Parents of a colored girl filed a petition in the court that due to segregation in schools, their child is forced to travel 40 miles every day to reach out to an all-black school, whereas an all-white school is just 6 blocks away. She must be allowed admission in that class, in that school. The court allowed admission in that school. But the governor did not allow that kid admission and closed down the school for the term. And as a reaction to this decision, the southern politicians signed a document called Southern Manifesto, which declared that this decision of allowing a black girl into a white school was injustice, and that Supreme Court has gone beyond its jurisdiction to give such a decision, and that they will do everything in their power legally to get this decision reversed. तो रिएक्शन आया 1955 में। दूसरा केस आया, इसको कहते हैं रोजा पार्क्स केस। ये अलाबामा स्टेट का मामला है। रोजा पार्क्स इज अ वुमन ऑफ कलर। ये अपनी जॉब से जब वापस आती है तो बस पे बैठने लगती है। बस में all black seats were taken, a white seat was available. She sat on that, which was a crime according to the law.
The conductor wanted her to vacate the seat, which she did not. The bus was stopped. She was arrested. After her arrest, the whole Alabama state, which has sizable majority of black people, erupted into protest. A young American priest, only 26 years old, Martin Luther King, later on Dr. Martin Luther King, led those protests. Peaceful protests. Dr. Martin Luther King was prophet of peace, inspired by Gandhi's politics of non-violence. He wanted to assimilate with the white people. A society of togetherness and non-segregation. Non-violence was his way of doing things. So, Dr. King arranged these protests absolutely peaceful, demanded black community and all other Americans to boycott bus companies that followed segregation. So bus boycott हुआ. ये मुकदमा साल चलता रहा, 10 महीने. Blacks made the boycott of buses successful. The bus companies reached that bankruptcy when Supreme Court declared segregation in buses illegal as well in 1955. Rosa Parks was released. Martin Luther King was arrested by the government and sentenced 2 years for disturbing public life. He came out of jail and formed SCLC, Southern Christians Leadership Council, SCLC, Southern Christians Leadership Council. Southern Christians Leadership Council. उसके बाद अगला अहम वाकया है जिसे हम, ये आया था 1957 में. लिटिल रॉक्स 9 इसको कहते हैं, आर्कनसा स्टेट है. लिटिल रॉक्स काउंटी का नाम है. 9 is the number of students. 9 students of color get permission of admission in an all-white school. The governor deputes police at the gate of the school not to let those kids enter. The parents of white children come to protest that they won't let these children enter a white school. President Eisenhower calls the governor, asks him that it's a court decision, we'll have to implement. Governor withdraws police, but this exposes the children and their parents to angry crowd. Scuffle hoti hai. President Eisenhower takes action, sends troops from federal government and takes over the control of state marshals, 10,000 jo hote hain, and send 2,000 troops from the federal government to implement court's decision. So it was for the first time in 1957 when Maya Angelou says, when the children of lesser gods entered the never never land. तो पहली दफा फौजियों के घेरे में इन 9 बच्चों को स्कूल में दाखिल किया गया. यहां आके आइजनहावर मजबूर हुए स्कूल्स को डिसैग्रीगेट करने का लॉ बनाने के लिए. इससे पहले आइजनहावर कहा करते थे, इन सारे 1952 से 60 तक आइजनहावर प्रेसिडेंट थे, तो आइजनहावर का स्टांस इस मामले पर यह था दैट कोर्ट जजमेंट्स एंड लॉज कैन नॉट चेंज द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल. लोगों के दिलो दिमाग कवानीन और अदालती फैसलों से नहीं बदले जा सकते. मार्टिन लूथर किंग ने इसके जवाब में कहा था, यस, द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द कोर्ट्स जजमेंट्स एंड लॉज, but they can stop the hands of the heartless. They can stop the hands of the heartless. So कवानीन होने चाहिए.
So finally 57 में Eisenhower administration passed a law that prohibited segregation in schools. लेकिन इसके बाद एक नया तमाशा शुरू हुआ कि स्कूल का गेट एक ही था, ब्लैक्स एंड व्हाइट्स वहीं से एंटर होते थे, अंदर जाकर क्लासेस, वॉशरूम्स, रेस्टरूम्स, लंच रूम्स अलग अलग थे। जॉन एफ कैनेडी जब प्रेसिडेंट बनते हैं 1960 में, तो उनसे बड़ी उम्मीदें थी लोगों को। जॉन एफ कैनेडी आपको पता है जस्ट 12,000 वोटों से जीते थे, और जॉन एफ कैनेडी को ब्लैक्स ने बड़ा खुल के वोट दिया था। वो पहले रोमन कैथोलिक प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, सेकेंड यंगेस्ट प्रेसिडेंट एज वेल। लेकिन कैनेडी भी जब पावर में आए तो खासे मोहतात थे। तो कैनेडी के टेन्योर में कुछ वाकयात हुए जिसके बाद कैनेडी वाज कन्विंस्ड कि एक पूरा सिविल राइट्स एक्ट लाकर हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन खत्म करनी चाहिए। वो वाकयात क्या थे? उनमें नंबर 1 वाज स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट। 1961 4 students in North Carolina refused to take lunch from the black lunch corner. They sat down there and they said, we won't eat until the food is served to both blacks and whites from the same food corner. In a week, 60,000 more students joined them in this protest all over the country. This ended the segregation within the schools in America. So it is not just the laws and the presidents, it's the brave men and women who stood for their rights and forced people to accept it. 4 students in North Carolina refused to take their lunch from a black lunch corner. They said they will only have lunch once the food is served to both blacks and whites from the same corner. And within a week, 60,000 more students joined them in this protest all over. This ended the segregation within the schools. अगला वाकया violence. Alabama की ये काउंटी Violence at Birmingham happened in 1961. Alabama स्टेट की ये काउंटी है बर्मिंघम। मार्टिन लूथर किंग अभी है डिस्टॉर्शन या बेहतर हो गया? Okay. So I was saying that the second incident that happened which is called violence at Birmingham. Birmingham is a county in Alabama state. Martin Luther King was leading a protest, peaceful, but the sheriff of the county used violence against peaceful protesters. He sent dogs, unleashed dogs on peaceful protesters. Was live telecasted. It was the first protest that was live telecasted by the American TV. So when people saw how government was handling peaceful protesters, more and more white people also joined. यार बच्चे इसका it is at the end of the students.
चेक करें, इसको फिक्स करें, मैं बार बार वो हो रहा है मसला। चेक करना आता है, नहीं आता तो बुलाओ किसी को। Live TV to all Americans, and more white people also joined the cause for black liberation. After this, in 1961 ही एक और इशू होता है जिसे हम कहते हैं जेम्स मैरिडिथ इशू। मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में ये एक अमेरिकन एयरफोर्स से फारिग हुए वेटरन मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, ब्लैक अमेरिकन। अदालत इन्हें अलाउ करती है। गवर्नर ऑफ मिसिसिपी यूनिवर्सिटी के दरवाजे पे खुद आके खड़े हो जाते हैं कि मैं इसे एंटर नहीं होने दूंगा। जॉन एफ कैनेडी हैड टू डू द सेम दैट आइजनहावर डिड एंड गेट दैट बॉय एंटर्ड इनटू यूनिवर्सिटी। 1963 में फिर फाइनली मार्च ऑन वॉशिंगटन स्टार्ट होता है। 1963 में फाइनली मार्च ऑन वॉशिंगटन स्टार्ट होता है। आपको याद होगा मैंने आपसे बात की थी 1863 में प्रेसिडेंट लिंकन issued a proclamation of emancipation by which he freed all the slaves through an executive order. 1963 में उस emancipation proclamation को 100 years हो गए, but not much was changed in the lives of the black people. So to commemorate that occasion and anniversary, black civil rights movements organizers planned March on Washington. 200,000 protesters, 2 लाख लोग वॉशिंगटन डीसी में अब्राहम लिंकन मेमोरियल पर जाते हैं, अब्राहम लिंकन मेमोरियल पर जाते हैं। वहां पूरे अमेरिका में ओवरऑल 14 लाख लोग ये वो मशहूर द ऑर्गेनाइजर्स, ये पीसफुल प्रोटेस्ट खत्म हुआ। I was saying that this was the protest on which Martin Luther King gave his famous speech of I have a dream speech, जिसे हम कहते हैं। After the protest, all the protesters dispersed peacefully, and the organizers of the march went on to meet the president. President assured them that he was working on a comprehensive civil rights bill, and soon all kinds of segregations will end. But President John F. Kennedy was shot dead on 22nd November 1963 by a gunman named Lee Harvey Oswald. Lee Harvey Oswald. After his death, Lyndon Johnson became the president. Lyndon Johnson से लोगों ने कहा कि आप कैनेडी का भी मेमोरियल बनाएं वॉशिंगटन डीसी में। Lyndon Johnson in a speech said, "No other memorial can better serve the memory of President Kennedy than the earliest passage
of his civil rights bill. So the civil rights bill was passed by Congress and Senate, and it became law on 2nd July 1964 when the President Lyndon Johnson signed it. So legally तमाम तरह की डिस्क्रिमिनेशन, schools, colleges, universities, buses, housing, jobs, everywhere, that ended on 2nd July 1964. इस लॉ के आने के बाद 1964 में ही नोबेल पीस प्राइज मार्टिन लूथर किंग को मिला. Martin Luther King became the youngest American to have ever got this Nobel Peace Prize. He was just 35 when he got this. 1965 में वोटिंग राइट्स एक्ट आता है. यह भी एक डिस्क्रिमिनेशन थी. 1965 से पहले अमेरिका में सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग लोग ही वोट कास्ट कर सकते थे. The Voting Rights Act gave the voting right to non-English speaking people as well. और non-English speaking people अमेरिका में 8% हैं स्पेनिश जो बोलते हैं. ठीक है जी. तो उनको वोटिंग राइट्स ब्लैक सिविल राइट्स की बदौलत मिले. नेटिव इंडियंस की हालत भी ब्लैक सिविल राइट्स मूवमेंट की वजह से बेहतर हुई. वो भी डिस्क्रिमिनेट होते थे. उनकी भी नेशनल कांग्रेस ऑफ अमेरिकन इंडियंस को डिफरेंट प्रेसिडेंट्स ने एड देना शुरू की. उनकी हालत भी बेहतर हुई. ठीक है जी. उसके बाद आए रिचर्ड निक्सन. निक्सन के टेन्योर में ये प्रोसेस जरा स्लो हुआ. निक्सन ही के टेन्योर में 1968 को 4 अप्रैल को Dr. Martin Luther King was killed. ठीक है जी. जेम्स अर्ल रे नामी बंदे ने इनको मर्डर कर दिया. So a lot was achieved between Linda Brown case and Martin Luther King's death. लेकिन निक्सन के बाद ये जरा प्रोसेस स्लो हो गया. There was another side of this black civil rights movement as well, जो आपको पता होनी जरूरी है. Whites feared a counter black revolution. So जब ये black civil rights movement साउथ से नॉर्थ में आती है तो नॉर्दर्स भी काफी डरे हुए थे कि हमारे यहां तो पहले ही इतनी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हमसे ये क्या चाहते हैं. Probably the blacks want our jobs and probably the blacks want our housing and they want to control us. ये एप्रीहेंशन नेशन ऑफ इस्लाम के प्रोपेगेंडा की वजह से भी थी. नेशन ऑफ इस्लाम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे एलिजा मोहम्मद नामी एक शख्स चलाते थे. ठीक है. सेमी प्रॉफिट सेमी प्रीस्ट टाइप की चीज थी. अगर आपको नोट आता है कि डिस्कस द राइज ऑफ नेशन ऑफ इस्लाम इन अमेरिका, तो उसका मतलब उम्मत मुसलमान का राइज नहीं है जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख आते हैं. उसका मतलब है इस ऑर्गेनाइजेशन का राइज. ये बनी तो थी 1930s में, लेकिन इसको भी ब्लैक सिविल राइट्स के साथ ज्यादा शोहरत मिली क्योंकि एलिजा मोहम्मद सोल्ड टू नेशन थ्योरी इन अमेरिका. उसने सारे ब्लैक्स को कहा कि वो मुसलमान हो जाएं और उसका फेथ फॉलो करें और जिंदगी के हर शोबे को टेक ओवर करें एंड स्टार्ट कंट्रोलिंग दी वाइट्स इंस्टेड. सदियों की नाइंसाफी का बदला लें. तो ये काउंटर आर्ग्यूमेंट था मार्टिन लूथर किंग की एसिमिलेशन एंड नॉन वायलेंस के अगेंस्ट. एलिजा मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स मैल्कम एक्स क्रुक टर्न्ड प्रीस्ट ये कहते थे. मार्टिन लूथर किंग की फिलॉसफी क्या थी?
डिसोबे द अनजस्ट लॉ, मार्टिन लूथर किंग कहा करते थे, डिसोबे द अनजस्ट लॉ बट लव योर ऑप्रेसर, disobey the unjust law but love your oppressor and never retaliate even when provoked. नाजायज कानून ना मानो लेकिन ऑप्रेसर से नफरत ना करो, जालिम से नफरत ना करो और वायलेंस पर ना उतरो भले तुम्हें प्रवोक ही क्यों ना किया जाए। मैल्कम एक्स की थ्योरी या अलीजा मोहम्मद की थ्योरी डिफरेंट थी। ये लोग कहते थे when the law fails to defend you, defend yourself. When the law fails to defend you, defend yourself using arms if necessary. हथियार भी उठाने पड़े तो अपने आप को प्रोटेक्ट करो। इस प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट फिर अमेरिका में ब्लैक पैंथर, ब्लैक मिलिशिया, ब्लैक फोर्स नामी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ब्लैक्स की बनी और वायलेंस की तरफ आई। मैल्कम एक्स सून अंडरस्टूड कि ये डेंजरस पाथ है और अलीजा मोहम्मद का असल ऑब्जेक्टिव कोई और है। सो ही एंडेड हिज एसोसिएशन विद नेशन ऑफ इस्लाम एंड स्टार्टेड प्रीचिंग नॉन वायलेंस, बट उसका उसे चांस नहीं मिला, डैमेज हैड ऑलरेडी बीन डन। मैल्कम एक्स वाज आल्सो मर्डर्ड in 1965. Malcolm X was also murdered in 1965. Malcolm X नाम की भी मूवी है डेंजल वॉशिंगटन की, अगर आप देखना चाहें तो ये एक साइड थी। अब इस राइज ऑफ ब्लैक पावर के अगेंस्ट जो कू क्लक्स क्लैन है, जो मैंने स्लेवरी में आपको पढ़ाया था, वो री एमर्ज करता है। कू क्लक्स क्लैन, व्हाइट सुप्रीमिस्ट्स once again became relevant, and this time they were not just against blacks. This time they were against blacks, they were against Catholics, they were against Jews, they were against Muslims, they were against immigrants. Catholics, Jews, Muslims, immigrants and blacks, और तकरीबन 70,000 के करीब इन लोगों ने अपनी मेंबरशिप बनाई इस टेन्योर में, और कू क्लक्स क्लैन के लोग कांग्रेसमैन बने, सेनेटर्स बने, सर्विस में आए, सिविल सर्विस में आए। ग्रेजुअली ये फिर डाइल्यूट हुआ। सो द ब्लैक सिविल राइट्स इशू स्टिल परसिस्ट्स, स्टिल रिमेन्स। स्टिल if you count jail population of America, 72% are blacks. If you count overall population of America, hardly 15% are blacks. So there's something seriously wrong either with the social structure of US, which makes blacks to commit more crimes, or with the justice system of US, which tends to see only the crimes committed by the blacks. So the discrimination still exists. Black Lives Matter is an organization and was a trend back then, still exists. Violence against black people still exists. Police fires at them with impunity. The recent violent protests you must have seen, and Trump's reaction you must have seen. So it is an ongoing issue in America, and hearts and minds of some of the people are still not changed in America. का रोल बताएं, तो कोर्ट्स का रोल पूछेंगे तो ये जो 4-5 केसेस मैंने आपसे डिस्कस किए, आप उस पर बात करेंगे। आपसे पूछा जाता है मार्टिन लूथर किंग का रोल, तो मार्टिन लूथर किंग का रोल हाईलाइट करेंगे। आपसे पूछा जाता है रीजंस क्या थे ब्लैक सिविल राइट्स मूवमेंट के, तो वो डिस्क्रिमिनेशन जिनका हमने जिक्र किया उस पर आप बात करेंगे। बाज़ औक़ात आपसे पूछा जाता है वो कौन ब्लैक्स में उन्होंने पूछा था, तो उनमें बाराक ओबामा हैं, कॉन्डोलीजा राइस हैं जो बुश की कैबिनेट मेंबर थी, पहले ब्लैक 4-स्टार जनरल थे अमेरिका के। ऑर्गेनाइजेशंस का रोल नहीं पूछा जाता, अगर पूछा भी जाए तो आप SCLC
सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप काउंसिल और नॉर्दर्न क्रिश्चियन लीडरशिप काउंसिल, कू क्लक्स क्लैन और इनका जिक्र कर सकते हैं। उसके अलावा जस्टिस जनरल कॉलिन पावल मैंने बताया जी। तो उसके बाद है जस्टिस थरगुड मार्टिन, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय जज थे सुप्रीम कोर्ट के। शर्ली चिज़ोल्म was the first black lady to become congresswoman in 1972। ये जो आप इश्तिहारों पर पढ़ते हैं ना जी कि ना बिकने वाला ना झुकने वाला, ये नारा शर्ली चिज़ोल्म का था। इनके इश्तिहारों पर लिखा होता था अनबॉट एंड अनबॉस्ड, अनबॉट एंड अनबॉस्ड। ये पहली। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट एंगल्स हैं जिनसे ब्लैक सिविल राइट्स मूवमेंट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आपके एग्जामिनर का ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको आपने ढंग से प्रिपेयर करना है। इवन इन इस्लामिक सोसाइटी इट हैपेंस, शहबाज ऑर्डर्ड मर्डर ऑन मैसेकर। वेल, इस्लामिक सोसाइटी नहीं है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि इस्लामिक सोसाइटीज़ में इससे बड़े बड़े मैसेकर्स हुए हैं। तो वन रॉन्ग, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। ठीक है जी, यहां तक कोई सवाल है तो पूछें, एनीथिंग एट ऑल। ओके जी, देयर नो मोर क्वेश्चंस, तो हम यहां से आगे चलते हैं। बच्चे, स्लाइड्स शेयर्ड हैं आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, आप उनसे कहें, वो आपको देंगे स्लाइड्स। दूसरी बात यह है कि हैंडआउट्स मैं दे चुका हूं, हैंडआउट्स भी उनसे कहें, उसमें ये सारी चीजें हैं मौजूद। जॉर्ज H.W. बुश, ये 4 साल के लिए प्रेसिडेंट बने अमेरिका के 89 to 93। He oversaw the transition from Cold War to the modern world. He oversaw and supervised collapse of Soviet Union. He had a very impressive CV to his name as well. He was the youngest aviator in American history. He joined Second World War as a boy. He was ambassador of USA to China. He was ambassador of USA to UNO. He was director of CIA in Vietnam War. He was vice president to Ronald Reagan for 8 years. And then he became president in 1989. 1989. When he came to power, there was this question that America has become enemy-less. Should there be more forces kept in the area or in the world, or should we withdraw them and spend more money in development at home? And then there was this argument that no, China is still communist, North Korea, Cuba can still be threats. And the world was also looking at America, that now that the Cold War is over, would US still protect the sovereignty and territorial integrity of smaller nations, or was it a facility only available in Cold War? The answer came in August 1990
when Saddam Hussein invaded Kuwait. Saddam invaded Kuwait, UN took notice, asked all member states to cut off trade ties with Iraq. America was also a friend of Iraq and a trade partner of oil. America stopped buying oil from Iraq. America froze $20 billion of Iraqi money stationed at American banks. Then an alliance was created, which was called the Desert Shield, to negotiate and force Saddam to withdraw. Okay? Obviously, anyone can go. So, force Saddam to leave. Saddam did not budge, did not leave. Then Operation Desert Storm was started by America. 1991 January, America started to conduct airstrikes on Saddam Hussein forces. It continued for 2 months. In March 1991, American forces entered Kuwait, and in less than 100 hours, they defeated Saddam Hussein and forced him to go back to Iraq. Bush made a speech that America and the world have delivered on their promise. Kuwait is liberated. His popularity ratings went high, but this success was a fleeting success because soon, due to oil price fluctuations, American economy came down. And this was the time when Arkansas Governor Bill Clinton came as challenger. Bill Clinton Democrat थे. He called himself the new Democrat. 46 years of age when he became president. He, Arkansas के governor थे. He appealed to all strata of life in America. He lived, despite being governor, he lived a common man's life. Used to jog in a public park, used to go to burger joints, used to play musical instruments. एक आम average American का image carry करते थे. But he was highly educated. इंटेलिजेंसिया को भी अपील करते थे. रोड स्कॉलर थे, जॉर्ज टाउन से पढ़े थे, कैम्ब्रिज से पढ़े थे. So when he started his campaign, तो उन्होंने जॉर्ज बुश की वॉर स्ट्रैटेजी को या डिप्लोमेसी को टारगेट नहीं किया, because he knew the man has been around since Second World War. So those credentials are impeccable. He cannot hit on them. He hit on his weakest part. He said, it's the economy. Stupid. That was Clinton's campaign slogan. It's the economy, stupid. उसकी campaign buses पे और हर जगह ये लिखा होता था. Long story short, Clinton became president of America despite getting only 43% of the total casted votes. He got the electoral votes and became president of USA. When he came to power, he emphasized on law and order and on economy. Law and order को fix करने के लिए उसने 2-3 main चीजें की. 100,000 new recruitments
in law enforcement agencies. 100,000 न्यू रिक्रूटमेंट्स, 1 लाख और बंदा लाया जाएगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए, ताकि पीपल टू पुलिस रेशो, पुलिस टू पीपल रेशो बेहतर हो सके. नंबर 2, बैन ऑन मिलिट्री स्टाइल असॉल्ट राइफल्स. ऑटोमेटिक मिलिट्री स्टाइल असॉल्ट राइफल्स के परमिट इशू करना क्लिंटन ने बंद कर दिए कि भाई सेकंड अमेंडमेंट में आपको वेपन रखने का हक तो है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप टैंक अपने घरों के सामने ला के खड़ा कर दें या आप छतों पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगा लें. तो क्वालिफाई कर दिया उस राइट को कि आप शॉर्ट गन्स वगैरह रख सकते हैं, मिलिट्री स्टाइल वेपन्स आपको रखने की इजाजत नहीं होगी. एक्सटेंडेड द परमिट पीरियड टू 90 डेज. वेपन का जो परमिट मिलता था, लाइसेंस मिलता था, जो 15 दिन में मिलता था, उसका पीरियड 90 दिन कर दिया. और उन 90 दिनों में एप्लीकेंट की क्रिमिनल हिस्ट्री, मेंटल हेल्थ हिस्ट्री, उसकी फैमिली की क्रिमिनल हिस्ट्री और मेंटल हेल्थ हिस्ट्री देखी जाती थी, क्योंकि वेपन घर पे अगर पड़ा है तो कोई भी यूज कर सकता है. इस प्रोसेस को स्लो और टाइम टेकिंग बनाया गया ताकि कम लोग अप्लाई करें. ही स्टार्टेड 3 स्ट्राइक्स प्रिंसिपल. 3 स्ट्राइक प्रिंसिपल क्या है? 3 स्ट्राइक प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपने कोई फेडरल क्राइम किया है और उसकी सजा फर्ज करें 1 साल है, आपको अदालत ने कन्विक्ट किया है, आप सजा काट के वापस आ गए हैं, आपने दोबारा कोई और फेडरल क्राइम किया है, उसकी सजा 6 महीने है, आपको अदालत ने कन्विक्ट किया है, आप सजा काट के वापस आ गए. अब जब आप तीसरी दफा कोई फेडरल क्राइम कमिट करेंगे, भले उसकी सजा 2 महीने हो, आपको होगी उम्र कैद, लाइफ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट. Because if you are convicted 3rd times, it would mean you are a professional criminal and you are a danger to American society if you are left unattended on roads. तो आपको हमेशा के लिए अमेरिकन सोसाइटी से दूर जेल में डाल दिया जाएगा. तो ये 3 स्ट्राइक्स प्रिंसिपल ने बड़ा खौफ शहरियों के दिलों में बिठाया और क्राइम कम हुआ अमेरिका में. एक और बड़ा डिफरेंट उन्होंने काम शुरू किया, इसको बोलते हैं मिडनाइट बास्केटबॉल लीग्स. मिडनाइट बास्केटबॉल लीग्स, ठीक है जी. अमेरिका में क्राइम का जो प्राइम टाइम था वो रात 11 से 2 बजे तक था. जो मेजर क्राइम था वो मगिंग थी. उसको रोकने, और मगिंग करते कौन थे? ये आवारा बेरोजगार लौंडे. तो उसको रोकने के लिए इनको काम पर लगाया गया कि आप बास्केटबॉल खेलें रात को, आपको गवर्नमेंट वजीफा देगी, आप अच्छा खेलते हैं तो आपको स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी, आपको NBA NFL वाले जो हैं वो प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स भी ऑफर करेंगे. जब ये मैचेस होने लगे तो लोकल टीवी चैनल्स ने दिखाना शुरू किए. बच्चे जो थे टीनेजर्स वो लोकल लेवल पर सेलिब्रिटीज बने. इकोनॉमिक एक्टिविटी भी स्टार्ट हुई, लोकल स्टोर्स ने इन्हें स्पॉन्सर करना शुरू किया. सो ग्रेजुअली इधर भी, इससे भी क्राइम कंट्रोल करने में मदद मिली. इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को काफी हद तक मैनेज किया. फॉरेन अफेयर्स में भी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन was a good president. He was a pacifist, did not want to use force, but whenever he did use force, he tried to get it done under the umbrella of UN. 1993 में ओस्लो अकॉर्ड करवाने में कामयाब हुए थे प्रेसिडेंट क्लिंटन. पहली दफा पैलेस्टाइनियंस एंड इसराइलीज agreed on something. West Bank and Gaza was given to Palestinians. The authority of Palestinian Authority, Al-Fatah, was accepted by the Israelis. तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस थी.
इसी की वजह से 1994 का जो नोबेल पीस प्राइज है वो यासिर अराफात और शिमोन प्रेज जो इसराइली फॉरेन मिनिस्टर थे उन्हें दिया गया था। ठीक, 1994 हेटी क्राइसिस को रिजॉल्व करवाया प्रेसिडेंट ने। हेटी एक छोटा सा मुल्क है, वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी प्राइम मिनिस्टर बर्टन एस्ट्राइड की। उस गवर्नमेंट को गिराया वहां के एक जर्नैल ने, जनरल राउल ने, और उसके बाद मुखालफीन पर रेन ऑफ टेरर अनलीश किया। एज ए रिजल्ट thousands of Haitians migrated to US in boats. गवर्नर्स ने कहा हमारी इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही, आप इन रेफ्यूजीज का कुछ करें। प्रेसिडेंट ने फौज को तैयार रहने को कहा, लेकिन उससे पहले जिमी कार्टर एक्स प्रेसिडेंट जो थे उन्हें हेटी भेजा टू टॉक टू जनरल राउल। जिमी कार्टर स्पोक टू हिम, टोल्ड हिम दैट इफ यू विड्रॉ पीसफुली योर लाइफ will be spared. If you don't, American forces are ready to attack, then no guarantee of your life can be given. General Raoul understood and withdrew peacefully. Burton Estride's democratic government was reinstalled. Clinton sent 2,000 troops anyways to this place so that peaceful elections could be held. तो हेटी क्राइसिस रिजॉल्व करवाया। 1994 में ही जॉर्डन इसराइल एग्रीमेंट हुआ एंड जॉर्डन recognized Israel and ended a war situation. मतलब 1967 से जॉर्डन और इसराइल इन अ पोजीशन ऑफ वॉर अगेंस्ट ईच अदर थे। 1994 में वो रिजॉल्व किया गया। 1996 में प्रेसिडेंट रिजॉल्व द बॉस्नियन क्राइसिस। बॉस्निया हर्जेगोविना और सर्बिया का एक झगड़ा आपने देखा ही है, देखा सुना नहीं होगा तो अल्फा ब्रावो चार्ली में जरूर देखा होगा। सर्बियन लीडर स्लोबोदान मिलोसेविच वाज डूइंग एथनिक क्लेंजिंग, नस्ल कुशी वो कर रहे थे मुसलमानों की वहां। यूएन टुक नोटिस, NATO attacked Slobodan Milosevic's armed depots and other installations to neutralize his capacity to fight. 500 हमले NATO ने किए थे उसके ठिकानों पर। So finally, under American pressure, an agreement was signed. 51% territory was given to Bosnia. A new country was created. 49% territory was given to Serbia. और American troops remained there till 1998 ताकि terms and conditions follow हो सके। ठीक है। He also signed NAFTA, North America Free Trade Agreement, जिससे प्रोडक्शन शिफ्ट की गई कनाडा और मैक्सिको में। अमेरिकन को सस्ती चीजें प्रोवाइड करने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चूंकि अमेरिका में बहुत ज्यादा थी। नेफ्टा साइन करने के बाद 43 स्टेट्स रजिस्टर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से और लॉ एंड ऑर्डर ठीक होने की वजह से, इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से अमेरिका में बेरोजगारी सदी की कम तरीन सतह पर आई। प्रेसिडेंट क्लिंटन made sure that economy was fixed, foreign policy was fixed. जाते जाते ईयर 2000 में उन्होंने कोशिश की थी कि कैंप डेविड समिट हो जाए। समिट करवाई गई थी, इसराइल और पैलेस्टीनियंस को एक दफा फिर इकट्ठा किया गया था, बट यासिर अराफात couldn't agree on the terms of agreement और ये नाकाम हो गया। By and large, Clinton was a successful president, but he had his fair share of controversies as well. A couple of controversies on his part. एक, इन्होंने अपने हेल्थ केयर प्रोग्राम का हेड लगाया था हिलरी क्लिंटन को, which is not a crime in America, but Hillary Clinton made a mess of it. उस हेल्थ केयर प्लान को even the Democrats did not support. They said it's too big, it's too complex, it's too expensive. That didn't work out. Then the second controversy was his shady investments. His shady investments in his parent state, Arkansas.
Under the American law, the president cannot do business or investments while in office, which he was believed to have done. And then the most touted scandal of his times was his sexual advances against a young presidential aide, Monica Lewinsky, who later on blamed him for that. So he was impeached on these counts too: indecency and financial indiscipline. But the required 2/3 majority could not be gained, जिसकी वजह से वो impeachment कामयाब नहीं हुई थी, and he left office. और उसके बाद Republicans, George W. Bush came to power. ठीक है जी. तो ये है जी क्लिंटन का एरा. 2019 में आपसे पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया. यहां तक कोई सवाल है तो पूछिए. Anything at all. Okay ji, let's talk about post 9/11 foreign policy of US. NAFTA was North America Free Trade Agreement, जिसके तहत प्रोडक्शन जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की वो कनाडा और मैक्सिको में शिफ्ट कर दी गई थी, क्योंकि वहां लेबर सस्ती थी तो चीजें सस्ती बन के अमेरिका आती थी और टैरिफ लग नहीं सकता था फ्री ट्रेड की वजह से, तो अमेरिकन को सस्ती चीजें मिल सकती थी. Post 9/11 foreign policy of USA. Foreign policy, the simplest meaning of foreign policy, बस generally foreign policy मुझे introduce करवा लेने दें, post 9/11 बाद में करेंगे. Simplest meaning of foreign policy is manifestation of country's national interest. Manifestation of a country's national interest to be achieved primarily through diplomacy. To be achieved primarily through diplomacy. एक मुल्क का जो नेशनल इंटरेस्ट है डिप्लोमेसी के जरिए आमतौर पर जो हासिल करने की कोशिश की जाए उसको फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है. However, national interest of a country is directly proportionate to that country's national power. आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या है वो डिपेंड करता है, उसकी अचीवमेंट डिपेंड करती है आपकी नेशनल पावर पे कि आप में जान कितनी है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट आज अमेरिका की या इसराइल की तबाही हो या इंडिया की तबाही हो, तो क्या हम वो नेशनल इंटरेस्ट अचीव कर सकते हैं भले जितनी ही अच्छी हमारी डिप्लोमेसी क्यों ना हो? नहीं कर सकते, क्योंकि वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ नेशनल पावर. नेशनल पावर क्या है? नेशनल पावर इज अ कंट्रीज कैपेसिटी to influence international relations, a country's capacity to influence international relations, be that militarily, politically or economically, जिस भी लिहाज से आप कर सकें. तो नेशनल इंटरेस्ट नेशनल पावर के साथ प्रोपोर्शनेट होता है, तभी आपकी बात सुनी जाती है. तो अमेरिका का भी हमेशा इसी तरह से रहा है, जैसे जैसे अमेरिकन पावर ग्रो की है वैसे वैसे ग्लोबल नेशनल इंटरेस्ट ऑफ यूएस भी ग्रो किया है. अगर हम अमेरिकन हिस्ट्री में फॉरेन पॉलिसी को देखें तो 1789 टू 1820 के टेन्योर को हम फॉरेन पॉलिसी ऑफ सर्वाइवल कह सकते हैं. द nascent state was trying hard to remain afloat. कोशिश कर रहा था अमेरिका by avoiding wars. Washington avoided wars, John Adams avoided wars, Jefferson avoided wars,
जस्ट टू कीप अमेरिका पीसफुल, क्योंकि सर्वाइवल का मसला था उस वक्त। हमारे पास नेवी नहीं थी, अच्छी आर्मी नहीं थी, अच्छी इकोनॉमी नहीं थी, तो जंग करना हमारे मफाद में नहीं था। 1820 से रफली 1917 तक हम मोनरो डॉक्ट्रिन को अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, जो हमारी स्प्लेंडेड आइसोलेशन भी है और हमारी नॉन इंटरवेंशन की थ्योरी भी कहलाती है। ठीक है, 1917 टू 1921 वर्ल्ड वॉर 1 है, जो हमें मजबूरन जाना पड़ा, आप पढ़ चुके हो। 1921 टू 1941 वंस अगेन हम नॉन इंटरवेंशन में जाते हैं। नए प्रेसिडेंट वॉरेन हार्डिंग्स हमें ले जाते हैं वापस अमेरिकन पॉलिटिक्स में इंस्टेड ऑफ यूरोपियन पॉलिटिक्स। 1941 टू 1945 हमारी फॉरेन पॉलिसी है, उसमें हम वर्ल्ड वॉर 2 ऑब्वियसली लड़ रहे थे, तो उसी से मैच करती थी। 1945 टू 1991 हमारी फॉरेन पॉलिसी वाज इंस्पायर्ड बाय कोल्ड वॉर। जो कुछ भी हमने किया वो कोल्ड वॉर इंस्पायर्ड था। यूएसएसआर ये कर रहा है, हम भी करेंगे, यूएसएसआर ये नहीं कर रहा है, हम जरूर करेंगे। इसी से हमारी फॉरेन पॉलिसी चली। 1991 टू 2001 इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड जिसमें अमेरिका रीएडजस्टेड इटसेल्फ from a bipolar world to a unipolar world and became the sole superpower and driving force of international relations and new world order. And then came 9/11. उस 9/11 ने फिर पैराडाइम शिफ्ट अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में लाया। उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। That's it for